Good morning, student. In our last video, we have discussed about the integers, addition of integers, multiplication, addition, and division. Today, we will discuss about the properties of integers. So, you can put the heading in your copy: properties of integers. I think it is the last video of chapter first, and tomorrow I will start our new lesson, our new chapter, lesson 2, that is fraction. Okay. Now put your heading and copy: properties of integers. Properties of integers. Now there are some properties of integers you have to study. The first one is closure property. First one is closure property. Closure property of integers. Okay, and we will discuss this property in every expression, either for addition, subtraction, multiplication, and division. And देखेंगे कि हम लोग closure property को कौन-कौन follow करता है. ठीक है. So first we will see what does this property says. Suppose we have two integers, a and b are two integers, and if we add a plus b, if we add these two integers, we will get some number. And if c is also integers, then we will say this follows closure property. Okay. Now first addition. And we will understand these properties by watching some example. Suppose -5 and -3 are two integers. -5 and -3 are two integers, and we have to add these two numbers, -5 plus -3. Okay, you have to solve this. -5 plus -3. -5 plus -3. -8. -8, which is an integers. Okay, it means that addition follows closure property. Okay, addition follows closure property. कोई भी दो नंबर ले लो, कोई दो नंबर का एडिशन इंटीजर ले लो, जब उसको ऐड करेंगे we will get a number which is an integer. Suppose 3 plus 4. We take 3 and 4, and when we add these two numbers, we will get 7, which is also an integer. जब भी कोई नंबर को, दो नंबर को, इंटीजर को लोग ऐड करेंगे, मुझे जो नंबर मिलेगा वो भी एक इंटीजर होगा. इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. ठीक है. अब देखो सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल है क्या सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल है? चेक करते हैं. यही नंबर का यूज करते हैं. -5 को -5 and -3 we consider two integer, -5 and -3, and we have to subtract this integer. Suppose -5 subtract -3. We have studied in the last video. -5 and this minus become plus. Different sign. 5 is negative, 3 is positive. Different sign, we will do subtraction. 5 minus 3 2. And when we do subtraction, the sign will be of greater number. 5 sign of -2. And -2, which is also an integer, which is also an integer. मतलब कि जब हम लोग दो नंबर को सब्ट्रैक्शन करते हैं और जो मुझे रिजल्ट मिलता है वो भी इंटीजर होता है, नहीं होता है? वो भी इंटीजर होता है. ठीक है. मतलब कि सब्ट्रैक्शन भी क्या कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है. क्लोज एंड सब्ट्रैक्शन आल्सो फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है. दो नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मुझे अगर इंटीजर मिलेगा तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी. नाउ मल्टीप्लिकेशन. Again, consider two number. -5 into -3. It will get plus 15, which is also an integer. It means multiplication also follows closure property. Now division. Will division follow closure property? Look, -5 divided by -3
5 upon 3, which is not an integer. 5 by 3 is not, which is not an integer. Okay, जो कि इंटीजर नहीं, it is रेशनल नंबर. तो क्या बोलेंगे, डिवीजन will not follow closure property. Addition, subtraction, multiplication follow, but division will not follow closure property. Okay. So next property, second one. I think you are getting my point. Second property is commutative property. Second one is commutative property. First we will see what this property says. Okay. Suppose we have two numbers, they are two integers, -5 and -3. Yeah. We take some simple example, 5 and 3. We take two integers 5 and 3. Okay. Suppose they have to add this to number. 5 plus 3, 8. We take two numbers 5 and 3 and we put the 5 in the front and after that we put 3. Okay. And if we put 3 in the first one, if we put 3, if we write 3 in the beginning and 5 after that, answer will be same. Okay, this means that addition follows. It means that addition follows commutative property. ठीक, मतलब कि position doesn't matter in addition. ठीक है, अगर दो नंबर को मुझे ऐड करना है, if we have to add two integers, position doesn't matter. Either we do 4 plus 4 plus -9, or you can do -9 plus 4. In both the case, you will get the same answer. देखो 4 plus -5, 4 plus -9 क्या होगा, -5, and -9 plus 4 again -5. Okay. तो अगर मुझे दो नंबर का दो इंटीजर का एडिशन करना है, पोजीशन डजंट मैटर. पोजीशन से कोई दिक्कत नहीं है. अगर हम किसी भी नंबर को आगे रखेंगे और किसी और सेकंड नंबर को पीछे रखेंगे तो मुझे सेम आंसर मिलने वाला है. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सब्ट्रैक्शन, क्या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है? क्या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल? अगेन विल टेक सेम एग्जांपल 4 and -9. 4 and -9. एक बार करते हैं 4 करते हैं, पहले 4 लेते हैं -9. हाँ, इसको लिखते हैं बाद में. तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 4 plus 9 that is 13. अब अगर इसको पहले लेते हैं -9 कर लेते हैं, -9 और -4. तो -9 -4 सेम नंबर ऐड करेंगे, -9 -4 इट इज -13. क्या ये दोनों सेम है क्या? 13 इज नॉट इक्वल टू -13. ओके, तो सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर मैटर करता है. ठीक है, एडिशन में मैटर नहीं करेगा. एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन में मैटर करता है. ठीक है, ऐसा अगर हम किसी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर हम 4 को आगे रख देंगे तो वी विल गेट सम डिफरेंट नंबर, और अगर इस बाद वाले नंबर को पहले रख देंगे तो मुझे कुछ और नंबर मिलेगा. तो ये सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ओके, नाउ थर्ड मल्टीप्लिकेशन. Again we take same example 4 and -9. 4 and -9. We take two integers 4 and -9. We have to multiply these two integers. First we put 4 in the front. 4 into -9, that is -36, and -9 into 4, again we get -36. In both the case we get the same number. ठीक है, like addition, in multiplication also order does not matter. ठीक है, order does not matter. If we have to multiply two numbers, we have to multiply two integers. We can put either of the number in the front in the first way and second way. In both the case, we will get the same number. Now, fourth, that is division. Will division follow commutative property? Let's see, 4 and -9. We take two integers 4 and -9. First
we will take 4 in the numerator and minus 9 in the denominator. We will get minus 4 by 9. Now, if we put minus 9 in the numerator and 4 in the denominator, we get some other ratio number. Minus 4 by 9 or here minus 9 by 4. It means that division will not follow commutative property. Okay. Only addition and subtraction follow. Only addition and multiplication will follow commutative property, but division and subtraction will not follow commutative property. Okay. It means if A and B are two integers, we can write A plus B equals to B plus A. ठीक है, मतलब कि ये फॉर ये कब है, ये ऑलवेज ट्रू होगा. A plus B देखो या B plus A देखो, ये ऑलवेज ट्रू होगा. और we can write A into B equals to B into A. मतलब कि एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए commutative property फॉलो होता है. ठीक है, it holds good for addition and multiplication only. Now our next property is associative property. ठीक है, associative property. Our next property is associative property. Associative property. Associative, third one is associative property. Associative property. If we have three integers A, B and C are three integers. If A, B, C are three integers and for addition, it means suppose we have three integers and we have to multiply all of them. So what we can do, first we can add A plus B plus C first, and then we add A. Okay, or either we can do A plus B first and then plus C in the later on. What we see in both the case, we get the same result. Okay, what we see, we get the same result. Example, suppose we consider 5, 6 and minus 8 are three integers. If we take example, we take three integers 5, 6 and minus 8. Now we have to add these three integers. It is A, B, C. So what we can do? We can do add first 6 plus 8. 5 plus 6 plus 8. It means that first we have to add 6 plus 8. 5 plus 6 plus 8, 14. And then 14 को add करें 5 से we get 19. And one other way we can add these three numbers. First we will add 5 plus 6. Then add 8. In this case we will get 5 plus 6 11 and plus 8 19. What we see, we get the same result. Okay, so addition hold good for associative property. मतलब कि addition क्या करता है, इस property को follow करता है. अगर मुझे तीन नंबर को मुझे ऐड करना है, तो अगर हम दो नंबर को किसी भी दो नंबर में ऐड करके थर्ड नंबर में ऐड कर सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा. मतलब कि ऑर्डर डज नॉट मैटर इन एडिशन. सब्ट्रैक्शन, क्या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है? क्या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है? देखो सेम नंबर को कर रहे हैं 5 6 8 कंसीडर कर रहे हैं. तो अगर हम लोग 5 माइनस 6 माइनस 8 करें तो क्या आंसर होगा? 5 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 2. वी गेट द 5 प्लस 2 दैट इज 7. ठीक है, हम आगे बार बार नंबर को पहले सब्ट्रैक्ट की, फिर जो आंसर है पहले को सब्ट्रैक्ट कर. और वी कैन डू 5 minus 6 minus 8. 5 minus 6 minus 1 and minus 8. Minus 1 minus 8, it is minus 9. What we see? We are not getting the same result. It means in subtraction order will matter. ठीक है, मतलब कि subtraction will not follow
associative property. It will not follow associative property. ठीक है, it will not follow associative property. Next, last, it is multiplication. Multiplication. Again, same example. 5, 6, 8. 5 into 6 into 8. It is 5 into 48. And 40 and 5 into 6 into 8, it means 30 into 8, that is 2. In both the cases we are getting the same result, but the multiplication will follow addition associative property. Last one is division. Again we take same example, 5, 6, 8. First 5 divided by 6 divided by 8. 5 divided 6 by 8. 2 by 5 divided by 3 by 4. 5 into 4 by 3, that is 20 by 3. Or we can do first 5 divided by 6 divided by 8. It means 5 by 6 divided by 8, or 5 by 6 into 1 by 8, 5 by 48. These are also not equal. Then we can say that division will not follow associative property. Division and subtraction will not follow associative property, but addition and multiplication will hold good for associative property. Okay. Now last point, last topic. इसके बाद आपका सारा थ्योरी खत्म हो जाएगा, फिर कल नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे. ठीक है, बस लास्ट टॉपिक है. एक लास्ट टॉपिक बच गया है, वो खत्म ही करते हैं आज. दैट इज एडिटिव इनवर्स. ठीक है, समझ लो, थोड़ा दो मिनट लगेगा. एडिटिव इनवर्स, सपोज कोई नंबर दिया हुआ है, सपोज कोई नंबर है 5. इसमें हम लोग कितना ऐड करेंगे सो दैट द रिजल्ट बिकम्स 0. ठीक है, कोई नंबर हम कितना ऐड करेंगे सो दैट द आंसर बिकम्स 0, उस नंबर को हम क्या करेंगे, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं. ठीक है ना, एडिटिव इनवर्स बोलेंगे. ठीक है, तो कितना ऐड करेंगे 5 में, तो -5 ऐड करेंगे. ठीक है, तो प्लस 5 में -5 ऐड कर दो, बिगेट विद 0. फिर -5 क्या है हमारा, एडिटिव इनवर्स है 5 का. ओके, सपोज we have to find the additive inverse of 9/7. मुझे इस फ्रैक्शन का निकालना है, मुझे इस रेशियो का निकालना है. एडिटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे, मतलब कि 9/7 में कितना ऐड किया जाए सो दैट इट बिकम्स 0. ठीक है, तो कितना ऐड करेंगे इसमें ऐड करेंगे -9/7. सेम न्यूमेरिकल वैल्यू बट साइन अलग करेंगे. तो भाई प्लस का तो माइनस लगा देंगे, और माइनस का तो प्लस लगा देंगे, प्लस दो और माइनस, और सेम लगता है. ठीक है, अब यही बोलेगा एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/12, इसका निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो -7/12 में कितना हम ऐड करें सो दैट इट बिकम्स 0. तो हम क्या बोलेंगे कि आंसर क्या होगा हमारा, सेम न्यूमेरिकल वैल्यू बट डिफरेंट साइन. अगर माइनस का प्लस कर देंगे तो ये आंसर हो गया प्लस. ओके, दिस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अगर समझ में आ गया तो यू कैन सॉल्व 1D ऑल क्वेश्चंस. You can solve 1D का. And last class tomorrow होगा, next lecture में, और उसका हम चैप्टर फिनिश करते हैं. ओके, चलिए, गुड बाय.